So we start with the new topic, solution and its colligative properties. What exactly do you mean by this term? Mixture of wrong answer. When two compounds are mixed in compounds are mixed in compounds are mixed in No. Point is, we do not segregate the understanding of the term solution with a mixture. We always understand a solution as a mixture and a mixture as a solution, which is wrong. Solution it is a homogeneous mixture of two or more than two substances. A homogeneous mixture of two or more than two substances. If it's not homogeneous, it is not a solution. So what is the criteria for a solution? It must be a homogeneous mixture. Now, the other thing that immediately crops up is, what do you mean by homogeneous? Having uniform appearance. Having uniform appearance. A homogeneous mixture is a mixture which is having uniform appearance. So a solution is a homogeneous mixture. Homogeneous means having a uniform appearance. So what do we mean by the term mixture? What do you mean by this term mixture? Mixture means what? Please do not talk amongst yourselves. Maintain silence and pay attention. It's only a 1 hour 30-minute lecture. Mixture, it is a combination of two or more similar or dissimilar substances. Combination of two or more similar or dissimilar substances. Combination of two or more similar or dissimilar substances. Mixture. Now, this combination will either give us a homogeneous result or it may give us a heterogeneous result. So, mixture का types है. There are types of mixtures. What are these types of mixtures? Homogeneous,
and heterogeneous. Homogeneous means uniform appearance, heterogeneous means non-uniform appearance. Homogeneous is uniform appearance, heterogeneous is non-uniform appearance. And if it's a homogeneous mixture, then it is a solution. If it's heterogeneous, it is a mixture, it is not a solution. It is a mixture, it is not a solution. Point over here to be noticed and understood is that every solution is a mixture, but समझे? बट नॉट एवरी मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन. पैसिव वाइज रहने दो ना चुपचाप, काहे के लिए उसको और कॉम्प्लिकेट कर. एवरी सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का टैग उसी मिक्सचर पे लगेगा जो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, जिसको देखने पे ये पता ना चल सके कि क्या सोल्यूट क्या सॉल्वेंट. व्हाट इज सोल्यूट व्हाट इज सॉल्वेंट डोंट नो. टेस्ट करके लिटमस पेपर डाल के एनालिसिस करके पता चलेगा, दैट इज डिफरेंट. लुकिंग एट इट इट मस्ट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. पानी में जब हम तेल डालते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये मिक्सचर है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस क्योंकि तेल ऊपर पानी नीचे. मिल्क में जब भी आप वाटर डालते हो, वाटर ऊपर मिल्क नीचे, नॉट अ सॉल्यूशन. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स राइट मिल्क इन वाटर, वाटर इन मिल्क, सॉल्यूशन. रॉन्ग आंसर. Water does not dissolve in milk. If you feel that water dissolves in milk, it is a myth. It doesn't. Water is all up, milk is all down. Density of milk is much more than that of water. So it's not possible to mix. So, solution homogeneous, uniform appearance, salt in water, sugar in water, alcohol in water. These are examples of homogeneous solutions, rather homogeneous mixtures which are solution. Getting it? Yes or no? That is not a mixture, you are just increasing the quantity. Similar नहीं हुआ, वो same हो गया. There is a difference between similar and same. When you say similar means some properties matching, some may not. Similar does not mean equal to. Same means equal to. Understanding? So if you have 2 liters of water in a container, you add more 1 liter of water into it, you are not making a mixture. You are just increasing the quantity. Okay? Chemically, the formula has to be different for it to be called a mixture or a solution. Is it clear? Understood? Note it down. Pay attention. Every solution has two components. Every solution has components. solute, solvent. Solute and solvent. What do you mean by solute?
It is the smaller component of any it is the smaller component of any solution. Smaller component of any solution is a solute. Solvent. Smaller component is solute. The larger component of any solution is a solvent. Now this is in terms of quantity, identifying it in terms of quantity. But nature wise, how will you identify what's a solute and what's a solvent? It is that substance which gets uniformly distributed into the mass or volume of the solvent. Getting this? It is that substance which gets uniformly distributed into the mass of the solute or of the solvent, mass or volume of the solvent. Now what is solvent? It is that substance which accepts the solute uniformly into its entire mass or volume. समझे? That substance which accepts the solute. Getting this? Yes or no? आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना तो बोलो. Example of this could be salt solution. Whenever you use the word solution at the end, it means into water. Into water. अगर solvent water के अलावा कुछ और है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा. अगर आप मेंशन नहीं कर रहे इसका ये मतलब है कि solvent water. तो यहां पर हम बोल रहे हैं salt solution. This is the solute. Sugar solution. Sugar is the solution means water is the solid. Again over here, solution means what? Water is the solvent. Water is the. Understanding this? Yes or no? आ रहा है समझ में? Clear है? This is about the two components, solute and solvent. Solute is the smaller aspect, that which gets uniformly distributed into the entire mass or the volume of the solvent, and solvent is that which accepts. Oil and water do not form a homogeneous mixture because oil is unable to uniformly distribute itself into water. Water is not ready to accept oil uniformly into its mass.
Understanding? You pour oil over milk, milk is not ready to accept oil, oil is not able to enter milk. You pour water over milk, milk is down, water is up, milk is not ready to accept water, water is unable to enter milk. You pour water in lemon juice will accept water, water will be able to enter the lemon juice uniformly. Or you pour lemon extract into water, lemon extract enters into water, water accepts the lemon extract. Pour alcohol over water, alcohol is able to enter water, water is able to uniformly accept alcohol. So जहां पर सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन ही नहीं है, उधर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. Understanding? Is it clear? Note this down. हाँ, पैकेट मिल्क. वो तो बनाया है, वो तो बना के दे दिया है ना सॉल्यूशन. I'll explain that, don't worry. You for now you remember water does not mix into milk. Water in milk, milk in water is not a solution. They don't mix water, they mix a solution. Calcium powder and other things are first mixed into water and a cheap solution is made. That is added into milk. Understanding? Today, why milk is not mixing in water or why water is not mixing in milk? Because milk has a higher density, water is lower in density. So if I want water to get uniformly accepted into milk or I want water to get mixed into milk, the densities has to match. How will the density match? Make water little thick and then add it into milk. Then it will form a mixture. That thickness of water is increased by adding cheap calcium powder. अडल्ट्रेशन का अगर आप बात कर रहे हो तो वाटर में तो हम डिटर्जेंट डाल दें और फिर अडल्ट्रेशन करते हैं. हाँ, शी इज टॉकिंग अबाउट अडल्ट्रेशन. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट टेलिंग द मिल्क विच इज कमिंग एट आवर होम इज अडल्टरेट. Milk which is coming at our home is milk. What have we done? We have only processed it. They have extracted all the fat and the fat products that can be procured from the milk, and then that milk is sold, packed into packets. Some buffer is added and it is sold. That's a different thing. You want to reassure yourself that milk and water do not mix into each other. Go at your home, take a glass, okay, preferably a container, a beaker type of a vessel which is made out of glass so that it's transparent, see-through. Pour milk into it, pour water into it, stir it. So far as you will continue to stir, you will feel that the water has mixed in milk, milk has mixed in water. Keep it undisturbed for 15 minutes on the table. You will notice all the milk settling down, all the water floating up. Clearly you will be able to see that. You can try it at your home also. No problem. सर फिर वो मिल्क तो वेस्ट हो जाएगा. कंटेनर को थोड़ा टिल्ट करने का, वाटर ऊपर है तो वाटर बह के निकल जाएगा, मिल्क इज स्टिल डाउन. बॉईल इट, ड्रिंक इट, फिनिश इट ऑफ. So everyone has noted this down? Yes or no? So now understand over here. Both solute and solvent can either be solid, liquid, or gas. Both solute and solvent can either be solid, liquid, or gas. So we have the solute, we have the solvent, and we have the
Example. So a case in which your solute also is solid and solvent also is solid. Both are solid. Example of such a substance is a metal alloy, where both the aspects are solids. Your solute is solid, your solvent is liquid. Sugar solution or salt solution. Example where your solute is solid, your solvent is gas. Dust in air. नेफ्थलीन, हाँ, लेकिन वो वेपराइज हो गया ना. It has undergone a change in its state. That same chemical component has undergone a change in its state. Dust was always a solid, is always a solid, will always remain a solid. Its particulate size will change, but it will continue to remain solid only. So far it is moving, we cannot experience its presence. But if the air in this room is allowed to settle down, after 2 or 3 days, like now you will be going on vacation, yes or no? One day only. Oh, no problem. So whenever if we notice that the volume of air is allowed to settle down, we will notice a layer of dust. Okay, we always notice a layer of dust. Yeah, you can see over there small amount of dust. You can see on this layer over here also some dust over there. Fine, fair enough. So dust in air. So that's about solid solutes. Let us say solute is liquid, solvent is also liquid. Alcohol in water. Okay. Nobody is asking you your preferences. Nonsense. Liquid in liquid, alcohol in water लिखा है, उधर बोलता है with ice. No one case. वाटर डाला ना, आइस भी पिघल के वाटर ही होने वाला था ना. क्यों बोल रहा है लेकिन? Yeah. Liquid, now pay attention, liquid in solid. Liquid is smaller quantity, solid is larger quantity. All types of paste. For example, your toothpaste, gels, jellies. Okay. जैम ब्रेड पे लगाते हैं ना. Liquid in gas. No, not ketchup. Ketchup is free flowing. Liquid in gas. Water vapor.
गैस इन गैस, Air. नो, हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन सिलेंडर, क्या गैस इन गैस, हीलियम इन ऑक्सीजन सिलेंडर, पी ब्लॉक में पढ़ा था हमने, डीप सी डाइवर को लगता है सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन सिलेंडर, हाइड्रोजन को मेटल और मेटल को हाइड्रोजन बहुत पसंद, तो अगर आपने मेटल के सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस फिलअप किया, फिलअप करके वो 2-1 महीने तक रखा हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर का हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे और वहां पे बनाना क्या चालू कर दे, मेटल हाइड्राइड। ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकने का काम नाइट्रोजन करते। नाइट्रोजन हीट को अब्जॉर्ब नहीं होने देता सिलेंडर में, हीट अब्जॉर्ब नहीं होएगा तो मेटल एक्टिवेट नहीं होएगा, तो हाइड्रोजन विल रिमेन एज H2। हीट की वजह से मेटल एक्टिवेट हो जाता है तो फिर मेटल हाइड्राइड्स बनने लगता है। हमको भी देखो नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए रहता है, जब भी रिएक्शन में हम लोग एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, मेटल। मेटल के ऊपर हाइड्रोजन डाला तो क्या होएगा, वो टूटेगा। 453 to 473 केल्विन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कीन्स टू गेट alkanes, H2 will break and become H, and then it will get added to the carbon. Gas in liquid, carbonated water. Many students write aerated drinks. It is a wrong answer. Many students write soda. Wrong answer. Gas in liquid only. Carbonated water. पानी जिसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया है। क्या पास किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वी हैव पास्ड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं, क्लोरीन। ध्यान दो इस पर, रीजन बहुत सिंपल। पेप्सी, थम्स अप, एरिएटेड ड्रिंक्स, ये बनता कैसे है? पहले पानी लिया, पानी में शक्कर डाला, तो ये सोल्यूट नंबर 1 विच इज सॉलिड। फिर उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाला, सोल्यूट नंबर 2। फिर उसमें वेजिटेबल ऑयल डाला, सोल्यूट नंबर 3। फिर उसको यूनिफॉर्मली मिक्स किया और फिर उसमें हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला। तो आप जिसको एरिएटेड ड्रिंक को गैस इन लिक्विड का एग्जांपल समझ रहे हैं, ये एक्चुअली गैस इन लिक्विड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जिसमें कई सारे सोल्यूट्स इन्वॉल्व। आपका सिलेबस फिलहाल डील कर रहा है उन सॉल्यूशंस के साथ जिसमें एक सोल्यूट एक सॉल्व। एंट्रेंस लेवल पे हम जब जाएंगे तब हम देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर्स के साथ हम डील कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे सोल्यूट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग? बट एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। सो एयर इन वाटर, गैस इन वाटर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ओनली इन वाटर, नथिंग एल्स। Your soda also contains flavoring agent, your soda contains buffers in it so that the pH of the solution is maintained. So it becomes a complex solution wherein you have 2 or more than 2 solutes being dissolved in the same solvent. 2 or more than 2 solutes dissolved in the same solvent. Another thing is gas in solid. गैस इन सॉलिड। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं, प्यूमाइस स्टोन या फिर
स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्जी नहीं है, स्पॉन्ज या स्पंज। बहुत से बच्चे स्पंज बोलेगा तो SPUNG लिख देता है। करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, बट हर अल्फाबेट प्रोनाउंस करना जरूरी नहीं है। सर ई भी लिखा आपने तो स्पॉन्जी हुआ ना। अरे यार स्पॉन्ज हुआ, स्पॉन्जी नहीं हुआ, समझे। गैस इन सॉलिड, इट इज pumice stone. Pumice stone is a type of a stone in, you know, in which there are a lot of air gaps. तो वो पत्थर दिखता बहुत बड़ा है, बहुत ही हल्का होता है। उसको जनरली हम यूज करते हैं पेपर वेट्स बनाने के लिए, हल्के हल्के पेपर वेट्स, डेस्क क्यूब्स बनाने के लिए, मतलब पेन पेंसिल होल्डर्स काइंड ऑफ। वेरी लाइट इन वेट, हैविंग द अपीयरेंस ऑफ अ प्रॉपर रॉक। तो पत्थर को देख के अपने को कैसा लगता है, बड़ा सा पत्थर अपन देखते हैं तो अपने दिमाग में इमेज आता है ना, अरे यार ये तो बहुत भारी होगा, ये हिलेगा भी नहीं अपने से। प्यूमाइस स्टोन भी वैसा ही है, बहुत बड़ा रहेगा बट आराम से लिफ्ट कर लोगे उसको। बहुत सारे उसके अंदर एयर गैप्स होते हैं, और ये एयर गैप्स की वजह से ही उसके ऊपर कार्विंग करना, अलग अलग डिजाइन बनाना, उसको इजीली कट करना आसान हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ही नहीं, अंदर बहुत सारे एयर गैप्स। सेम इज द केस विथ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को पानी में डालो, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है? अंदर खाली जगह है, इसीलिए तो पानी को ऑब्जॉर्ब कर। यस और नो? आया समझ में? चलो लिख लो फटा। तुम क्या बोल रहे हो? क्लोरीनेटेड वाटर रहेगा ना, प्रोवाइडेड Cl2 इज इन गैसियस फॉर्म। Cl2 गैस इन वाटर। गलत बोल रहे हैं वो लोग, दे आर रॉन्ग। WRONG, रॉन्ग। एयर, you have oxygen, you have carbon dioxide, you have water vapor in air, you have dust in air. Yes or no? So can gas and gas be air? Gas and gas means solute also gas, solvent also only gas. But when you talk about air, it is water vapor, it is dust. Water vapor is liquid in air, dust is solid in air. You write gas, you write gas in gas, na? Why you are complicating it further? Everybody is going to write air. You write nitrogen in nitrogen cylinder. Solute में सोल्यूट में गैस एंड सॉल्वेंट। gas in solid. Naphthalene is gas. No, but Naphthalene is solid. See, let us understand one. एक ही मिनट, अच्छा आप कर रहे हैं ना अपने को। It is a change, a response of naphthalene to heat. Naphthalene solid ball, keep it in the cupboard between the clothes. So when you see after 10 days, 12 days, 15 days, what we see? Change in its size. It has shrunk to a very small size. Means it has vaporized. It has vaporized. It has undergone a change of state. इसीलिए उसको सब्लिमेशन बोलते हैं ना। अगर उसका स्टेट ही चेंज नहीं होगा, हाँ रहेगा ना। H2S is gas, only H2S in water, gas in liquid. Yes, बोलिए। Ketchup is a solid in liquid, solid solute liquid solvent, solid solute liquid solvent, solid solute liquid solvent. Yes, 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 sir. But it is again a
complicated solution in which there are more than two solutes present in the same solvent. हाँ बोलो. Mayonnaise is a paste, yes. क्या? हाँ मेयोनीज आएगा ना. हाँ तो उसको आदत है खुद का डाउट दूसरे के नाम पे डालने का. लीव इट में. उसका दिमाग उतना ही चलता है. अभी क्या करें. She can not think beyond that. Yes or no? अभी तक उसका माइंड कैलिब्रेट कर चुका होगा. लेक्चर खत्म होने के बाद ये मुझे खाने जाना है, इधर से जाना है, ये खाना है. Identifying the proportion of solute in solvent. But before going to that, let us understand what do we mean by azeotropic solution. Let us understand what do we mean by azeotropic solutions. Okay. Identifying the concentration, will come to that. What do we mean by azeotropic solutions? Some solutions are solutions, but it's not possible so some solutions are solutions, but it's not possible to identify the solute and solvent into it. Basically, these solutions cannot be identified as a solution. Basically, these solutions cannot be identified as a solution. Such solutions are known as what? Azeotropic. Example, milk. Milk is an example of a azeotropic solution. Milk is an example of. So it is a solution, but does it appear as a solution? No. Because it does not appear as a solution, we always consider it as a solvent. अगर आप मिल्क का बात करते हैं, मिल्क contains glucose, galactose, lactose,
lactic acid, all of this is uniformly present in every drop of milk. बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम मिल्क को सॉल्वेंट समझते हैं. We want to dissolve sugar in milk, we want to dissolve tea powder in milk, we want to dissolve coffee powder in milk, we want to dissolve Bonvita in milk. So we are considering it as a solvent. क्यों? क्योंकि ये एक solution है, ऐसा हमें पता ही नहीं चलता. Every drop contains all of this and possibly a few things more as well. But क्या ये हम identify कर पाते? नहीं. If you talk about blood, blood contains RBC, WBC, platelets, HCO3 minus, H plus, oxygen, enzymes, hormones, all of this. Yes or no? Air. Air contains CO2, O2, N2, H2O in gaseous form, dust particles. So all of this is present in air. Looking at it, can we identify? No, cannot. Can the solute and solvent in these examples be separated easily? No. Can they be identified easily? No. They are isotropic solution. मतलब solute solvent में इतने अच्छे तरीके से homogeneously mix हो गया है कि उसको segregate separate करना possible नहीं है. It's not possible to segregate and separate that. It is not possible to segregate and separate that. Understanding? So such solutions are called as what? They are called as azeotropic solution. Clear? Understood? तो इसीलिए इसको एजियोट्रॉपिक बोलते हैं. एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं. नॉट पॉसिबल फॉर अस. क्लियर? श्योर? 100%? Identifying the proportion of solute in solvent. Now there are different ways by which you can identify the proportion of solute in the solvent. There are different ways by which you can identify the proportion of solute in the solvent. The very first one is molarity. Molarity is nothing but denoted by capital M. Now what exactly do we mean by this? It is the ratio of moles of solute
to the volume of solution in liters. Ratio of moles of solute to the volume of solution in capital M is moles of solute upon volume of solution in liters. Capital M. What is moles? Or for that matter, what is mole? Weight of substance in grams upon molar mass of substance in grams. This is molarity, ratio of moles of solute to the volume of solution in liters. The next thing that we talk about is molality. Smaller. Molality, small. What is molality? It is the ratio of moles of solute to the weight of solvent in kgs. Ratio of moles of solute to the weight of solvent in kgs. To the weight of solvent in kgs. तो एक जगह पे मोलार एक जगह पे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किधर कहाँ पे आएगा? हाँ अबे एक मिनट यार. मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोलैरिटी, moles of solute upon weight of solvent in kgs. Moles of solute upon weight of solvent in kgs. अब क्या डाउट है? मुझे लगा मैं लिखा कुछ और हूं और बोल कुछ और रहा हूं. क्या बोल रहे हो? कहाँ? वेट ऑफ मोलारिटी. यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे नहीं, सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सोल्यूट को मोल्स में कन्वर्ट करके ऑलरेडी न्यूमरेटर में ले चुके हो. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा इन केजीज, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा. वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लिया तो एक फैक्टर दो जगह पे रिपीट हो रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. 5 ग्राम शक्कर डाला
50 ग्राम पानी में, तो 5 ग्राम शक्कर है 50 ग्राम पानी में ना। अगर 5 को 55 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 तो 2 बार रिपीट हो गया, एक बार न्यूमरेटर में भी और एक बार डिनोमिनेटर में भी। अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग दिस और नो? सो दिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। गेटिंग इट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in molarity. Molality is weight of solvent.